Hello everyone. How are you all and how your preparations are going on? I hope you all are doing great. In this video, I have covered the national current affairs with person in news, place in news with top 50 plus MCQs. So let's start with a quick revision. Supreme Court stated that personal liberty is protected under which article of the Indian Constitution? So the option C, आर्टिकल 21 is correct. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षित है? ऑप्शन आर्टिकल 21. Despite ranking third globally in rare earth reserves, why does India contributes less than 1% to global production? दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर होने के बावजूद भारत वैश्विक उत्पादन में 1% से भी कम योगदान क्यों देता है? So the option B is correct. Regulatory hurdles and limited processing capacity. नियामकीय बाधाएं और सीमित प्रसंस्करण क्षमता. Why did the Supreme Court order a fresh expert review on the Aravalli Zines? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर नए सिरे में विशेषज्ञ समीक्षा का आदेश क्यों दिया? Yes, the option B is correct. Due to ambiguity in defining the Aravalli Range and concerns over environmental impact. अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में अस्पष्टता और पर्यावरण प्रभाव संबंधित चिंताओं के कारण. What was the approximate contribution of agriculture and allied activities to India's GDP in financial year 24 to 25? Which was 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि और संबंध गतिविधियों का अनुमानित योगदान कितना था? So the option C, 16%. Which Indian Navy submarine did President Draupadi Murmu board for an operational sortie? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय नौसेना पनडुब्बी में सवार होकर एक सैन्य अभियान पर प्रस्थान किया था? So the option C is correct. That is INS Vaksir. The 129th episode of Man Ki Baat December 2025 mainly emphasized which national vision? मन की बात के 129 एपिसोड दिसंबर 2025 में मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया? विकसित भारत. Who created the world record-breaking sand and apple sculpture of Santa Claus at नीलाद्रि बीच पुरी? पुरी की नीलाद्रि बीच पर रेत और सेब से बनी सांता क्लॉज की विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली मूर्ति किसने बनाई? So the option B, Sudarshan Patnaik. India's first standard for agarbatti notified by BIS in 2025 is known as. भारत में अगरबत्ती के लिए पहला मानक जिसे BIS द्वारा 2025 में अधिसूचित किया गया था उसके इस नाम से जाना जाता है. So the option B, IS 19412 2025. India's first national weapon database has been launched primarily to. भारत का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है. So option B, track government firearms and strengthen internal security. सरकारी हथियारों पर नजर रखे और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करे. Why has NetGrid has linked with the National Population Register NPR? नेटग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर से क्यों जोड़ा गया है? So the option B is correct to improve intelligence gathering and speed up criminal investigations.
Indian Railways plan to double originating train capacity in how many major cities by 2030? भारतीय रेलवे की योजना 2030 तक कितने प्रमुख शहरों में ट्रेनों की परिचालन क्षमता को दोगुना करने की है? ऑप्शन सी 48. Next question is, who announced the major reforms to modernize EPFO services? ईपीओ सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख सुधारों की घोषणा किसने की? So the option C, Dr. Mansukh Mandaviya. Which mountain range has been declared completely off limits for new mining leases by the Union government? केंद्र सरकार द्वारा किस पर्वत श्रृंखला को नए खनन पट्टों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित घोषित किया गया है? So the option C, Aravali Range. The Rashtra Prerna Sthal, inaugurated in December 2025, is dedicated to the ideals of which former Prime Minister? दिसंबर 2025 में उद्घाटित राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस पूर्व प्रधानमंत्री के आदर्शों को समर्पित है? So the option C, अटल बिहारी वाजपेयी. The 40th Asian Water Bird Census 2026 will be held at which location? 40th एशियाई जल पक्षी जनगणना 2026 किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? So the option B is correct. Godavari Estuary. India's first comprehensive anti-terror policy mainly aims to. भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है. क्या है? B. Create a unified national framework to combat terrorism. PMGSY was launched in which year? PMGSY किस वर्ष में शुरू किया गया था? So the option C, 2000. The Constitution of India was released in the Santhali language using which script? भारत का संविधान संथाली भाषा में किस लिपि का उपयोग करके जारी किया गया था? So the option C, Old Chiki. India's current maternal mortality rate MMR is भारत का वर्तमान मातृ मृत्यु अनुपात MMR इस प्रकार है. So the option C is correct. 97 per 1 lakh live births. Gujarat's target to installing 10 lakh residential rooftop solar systems by March 2027 is being implemented under which scheme? मार्च 2027 तक गुजरात में 10 लाख आवासीय छत सौर प्रणालियों को स्थापित करने का लक्ष्य इस योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है. So the option B is correct. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. Which of the following is the total length approved under Delhi Metro Phase 5th A? निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली मेट्रो चरण 5th A के अंतर्गत स्वीकृत कुल लंबाई है? 16.07 किलोमीटर. Rashtra Prerna Sthal, inaugurated by Prime Minister Modi, is dedicated to promoting which of the following ideals? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल निम्नलिखित में से किस आदर्श को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस. ऑप्शन बी. The AI-based wildlife protection system introduced by Indian Railways primarily aims to. भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई AI आधारित वन्यजीव संरक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? So the option B, prevent animal collisions on railway tracks. The proposed Bureau of Port Security (BOPS) is modeled on which organization? प्रस्तावित बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS किस संगठन के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन सी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS.
Which major change does the Insurance Amendment Bill 2025 introduce? बीमा संशोधन विधेयक 2025 में कौन से प्रमुख बदलाव प्रस्तावित है? So the option B, 100% FDI in insurance sector. How many days of base employment are guaranteed per rural household under the VVG-RMG? VVG-RMG अधिनियम 2025 के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है? Yes, तो option C, 125 days. The commemorative postal stamp released by PM Narendra Modi at the WHO Global Summit on Traditional Medicine was on which medicinal plant? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया स्मारक डाक टिकट किस औषधि पौधे पर आधारित था? अश्वगंधा is the correct option C. The Shanti Bill 2025 grants statutory status to which body? शांति विधेयक 2025 किस निकाय को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन सी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB. What is the key feature of Bharat Taxi's business model? भारत टैक्सी के व्यापार मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है? So the option B, zero commission for drivers. Which government body released the periodic labor force survey showing improvement in India's labor market in November 2025? किस सरकारी संस्था ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है जिसमें नवंबर 2025 में भारत के श्रम बाजार में सुधार दर्शाया गया है? Should option C, Ministry of Statistics and Program Implementation. What is the Paramveer Dirgah at राष्ट्रपति भवन डिस्प्ले? राष्ट्रपति भवन स्थित परमवीर दीर्घा में क्या प्रदर्शित है? Portraits of परमवीर चक्र अवॉर्डीज, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के चित्र। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किया गया है? India's first wildlife safe highway has been developed on which national highway? So the option C, NH45. The Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill 2025 aims to replace which of the following bodies? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस निकाय को प्रतिस्थापित करना है? Yeah, so the option B is correct. UGC, AICTE and NCTE. मंडलों सिंचाई और तमिल साहित्य में उनके योगदान के लिए किस व्यक्ति को स्मारक डाक टिकट में सम्मानित किया गया था? Who was honored with a commemorative postage stamp for his contribution to temples, irrigation, and Tamil literature? Yeah, so the option B is correct. Peru B. Dugu Mutharayar II. परमाणु ऊर्जा विधेयक किस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है? The Atomic Energy Bill proposes amendments to which act? Atomic Energy Act 1962 is the correct option C. The cabinet द्वारा अनुमोदित कोल सेतु विंडो का मुख्य उद्देश्य क्या है? The coal setu window approved by the cabinet is mainly aimed at improving transparency in auction-based coal linkage. Option B. What is the major new features of Census 2027 in India? भारत में जनगणना 2027 की एक प्रमुख नई विशेषता क्या है? Option C. First digital census with caste data inclusions. भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोर्ट ने
वाणिज्यिक परिचालन कहाँ से शुरू किया? When did India's first hydrogen fuel cell passenger vessel begin commercial operations? Varanasi. India's first all-electric green truck is mainly aimed at promoting भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित हरित ट्रक मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है. ऑप्शन बी cleaner and sustainable port operations. Which organization prepared the standards for India's first hydrogen powered train? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के लिए मानक किस संगठन ने तैयार किए? RDSO. What was the main objective of the Vigyanika Science Literature Festival 2025? विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? So the option B, to promote science through literature and creative communication. The Sujalam Bharat app is mainly associated with which government mission? सुजलाम भारत ऐप मुख्य रूप से किस सरकारी मिशन से संबंधित है? ऑप्शन बी जल जीवन मिशन. Deepavali was inscribed on UNESCO representative list mainly to recognize its. दीपावली को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में मुख्य रूप से उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को मान्यता देने के लिए शामिल किया गया था. ऑप्शन सी कल्चरल, spiritual and social significance. Microsoft's record $17.5 billion investment in India 26 to 29 is primarily aimed at strengthening India's transition to which infrastructure? भारत में माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश 2629 मुख्य रूप से भारत के किस बुनियादी ढांचे में परिवर्तन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है? तो ऑप्शन सी AI public infrastructure. The National Intelligence Grid Net Grid was primarily conceptualized after which event? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड की अवधारणा मुख्य रूप से किस घटना के बाद विकसित की गई थी? ऑप्शन सी मुंबई टेरर अटैक्स 2008. Dhruva probably aims to introduce which of the following in India's digital ecosystem? ध्रुवा का मुख्य उद्देश्य भारत के डिजिटल परिस्थितिकी यंत्र में निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करना है? ऑप्शन बी address as a service. Which city recorded the highest PM 2.5 levels in India in November 2025 according to CREA study? CREA के एक अध्ययन के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में किस शहर में PM 2.5 का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया? ऑप्शन डी गाजियाबाद. The inauguration of the bio-CNG and fertilizer plant by Banas Dairy is associated with which national initiative? बनास डेयरी द्वारा बायो-CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस राष्ट्रीय पहल से संबंधित है? ऑप्शन सी व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0. भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या किस तिमाही में 1.49% की वृद्धि के साथ 1.017 अरब तक पहुंच गई? ऑप्शन बी क्वार्टर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 26. राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि the primary objective of the right to disconnect bill 2025 is to option C protect employees from work-related digital burnout. The paperless passport verification process through DigiLocker is jointly launched by which ministries?
डिजिलॉकर के माध्यम से कागज रहित पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है. So the option B is correct. Meeting at Ministry of External Affairs. नवंबर 2025 में भारत में आधार प्रमाणीकरण के कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं? तो ऑप्शन सी 231 करोड़. How many Aadhaar authentication transactions were recorded in India in November 2025? 231 crore. So that's all for today, everyone. We're going to meet in the next video. Please requesting everyone to please subscribe my channel and click on the like buttons and share to as many friends as you can. Thank you all. Bye.